Hi, I'm Janice, and I welcome you all again to our family life. Swine flu पे हमें बहुत रिस्पॉन्स आया है. On popular demand, we have again Dr. Ashutosh Shukla with us, who is the director and head of internal medicine at Artemis Hospital. Welcome back, doctor. Thank you so much, Janice. Thank you for inviting me again. Yeah, so हमारे को Facebook पर हमारी कम्युनिटी पे और व्हाट्सएप पर स्वाइन फ्लू के रिगार्डिंग बहुत क्वेरीज आई है. आई थिंक ये केसेस जो हैं ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं. तो इस वजह से हमने दोबारा डिसाइड किया है कि हम आप लोगों के लिए दोबारा से स्वाइन फ्लू पे डॉक्टर आशुतोष को लाए हैं जो आपकी क्वेरीज आंसर करेंगे. तो स्टार्टिंग हम दोबारा करते हैं एक बार स्वाइन फ्लू से ही कि स्वाइन फ्लू जो है वो क्या है और ये कैसे स्प्रेड हो रहा है ह्यूमंस में. स्वाइन फ्लू एक वायरल डिजीज है. ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्वॉल्व करती है एंड इट्स अ हाईली कंटेजियस डिजीज. इट इन्वॉल्व्स द अपर एयरवेज एंड द लंग्स and it is highly infectious. From one person it quickly spreads to another person. So that's why it's a highly contagious disease. And it's caused by a virus which belongs to the influenza category of virus. And influenza viruses are basically of three types, A, B and C. This H1N1 falls in the A category of virus. And this virus has a unique property that it changes its shape and texture, in the sense the antigens on the surface of the virus keep changing, mutating from time to time. That's why the prevalence increases every year. अच्छा, तो जो स्वाइन फ्लू है वो हमारा एक्चुअली ये वर्ड आया है पिग्स की उससे कि पिग्स के थ्रू ये पहले स्प्रेड होता था. So it was actually in 2009 when the scientists first identified this virus in pigs. And that's why the name got tagged along as swine flu. But thereafter the infection has always been, transmission has been from human to human. So in fact it's better to call it as a H1N1 virus than as to call it a swine flu, which was earlier labeled as swine flu. Okay, so is it like कि पहले जो होता था ये स्वाइन फ्लू ये पिग्स के उससे होता था? Yeah, so basically those men who were pig handlers, they contracted the disease from pigs because it was multiplying amongst pigs. And from those people it spread to other human beings, and then it spread all across the globe. Okay. तो अभी जो है ये कैसा है अभी, मतलब कैसे अब हम ह्यूमंस को हो जाता है? So how it spreads from one human being to another is very important to understand, because once you understand how it spreads from one person to another, then you can take some preventive steps around that. So what happens is that if a person is infected with a particular virus, he spreads the virus in tiny droplets known as water droplets in his cough and he's sneezing. So these tiny droplets have a small droplet has about virions to the tune of 1 lakh to 1 million viruses in each particle, which are not visible to our naked eye. They're only visible through the microscope. But the spread happens either directly or it happens indirectly. Directly in the sense when a person is coughing and sneezing, people who are within 3 feet radius of that person, means an arm's length radius, the virus can spread directly to a healthy individual. And indirect spread happens when index case, a patient who is coughing or sneezing, spreads these water droplets, and these droplets fall on certain hard surfaces like the keyboard or the door handle or telephone handset. There the virus survives for at least 2 hours, if not more. And when a healthy individual comes and touches these hard surfaces, the virus comes onto his fingers. And when this healthy individual touches his eyes, mouth or nose with his fingers, that's how the virus travels inside your body, and that's how it spreads from a infected person to a healthy individual. And that's why, because of these two modes of transmission, direct and indirect, it's such a contagious and a highly infectious disease. And without knowing, people are contracting this infection so quickly. That's why the numbers have gone up
recently in the country. So is it like कि if we eat pork or pig meat or something, तो उससे भी क्या होता है कि spread हो सकता है? No, that this is a myth. It does not spread via meat. It spreads only by droplets. It's just that the name swine flu is sticking on. So there is no harm. You can go ahead and eat chicken, you can eat pork, but make sure that it is well cooked meat, it is well cooked chicken. One should avoid having, raw eggs and mayonnaise which has raw eggs. But otherwise, you can easily go ahead and have well cooked pork, you can have well cooked chicken, there's no problem as far as that is concerned. Okay, another thing, doctor, मुझे पिछली बार फीडबैक मिला था कि if we can make it an English conversation, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो हिंदी में हमारे को ज्वाइन करते हैं. Sure. और अगर हम उनको हिंदी में थोड़ा आंसर देते हैं. Sure, I'll be happy to do that. अच्छा, और एक चीज और मैंने अभी रिसेंटली एक बार पढ़ा भी था कि बर्ड फ्लू भी काफी बीच में हुआ था. तो बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू में कितना कुछ डिफरेंस है या कुछ सिमिलैरिटी है? So ये सारे वायरसेस इन्फ्लुएंजा वायरसेस में ही आते हैं. All are influenza category of viruses and they are all influenza A viruses. Okay. A B C में A कैटेगरी में आते हैं. पहले आपने सुना होगा एवियन फ्लू फैला था, फिर बर्ड फ्लू फैला, फिर ये H1N1. So all are of the same category. The only thing is that this particular influenza virus changes the shape and character so quickly. We call it antigenic drift and antigenic shift. So on the surface, there are certain antigens on this virus which mutate from time to time. And this is known as antigenic drift, as in when in a year there's an outbreak. It happens because of this change or mutation which is known as antigenic drift. And every 20 years or so, approximately, there's a antigenic shift, means the entire structure of the virus changes. So this particular virus is totally new and it spreads across countries and continents, causing pandemics. तो अभी जो आपने मुझे बताया कि 3 कैटेगरी के वायरसेस होते हैं, तो ये किस तरीके से होते हैं, मतलब कौन सा ज्यादा जो है इसमें हमारे को इफेक्ट करता है, डेंजरस? So A, B and C are all influenza viruses and it is the influenza A virus which is the H1N1 that is the more dangerous virus. Because it has the potential of causing complications. और जो B और C हैं वो? They usually cause viruses, viral infections, जैसे खांसी जुकाम हुआ, सेल्फ लिमिटिंग हुआ, अपने आप ठीक भी हो जाता है. तो जो बाकी जो फ्लू वगैरह है उसमें जो वायरसेस जो डोमिनेंट है वो B और C है? Yes, mostly B and C, but our worry is on the A H1N1 because of its potential for complications. अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन आया है हमें कि क्या स्वाइन फ्लू 2 बार हो सकता है एक ही पर्सन को? Yes, of course. A person who's already had swine flu in the past, उसको दोबारा हो सकता है swine flu. ऐसा because ये जो वायरस है ये म्यूटेट करता है, ये कैरेक्टर चेंज करता है अपना, तो दोबारा किसी और रूप में उसी इंसान को दोबारा इन्फेक्ट कर सकता है. अच्छा, और ये कितना डेंजरस है हमारे लिए स्वाइन फ्लू? So अगर टाइम से आपने ट्रीटमेंट कर लिया तो एकदम ठीक हो जाता है. अगर आपने टाइम से इसका इलाज नहीं कराया तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने का रिस्क रहता है, जैसे निमोनिया हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकती है, हार्ट में मायोकार्डाइटिस हो सकती है, लंग्स में एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है. ये जो कंडीशंस हैं, because of these conditions the patient can land up in an ICU. Okay. And patients with swine flu in ICU have a very high mortality rate, up to 80 to 90%. Okay. Another question is, if I wash my hands regularly, is that enough to protect me from swine flu? It is helpful, yes, indeed. It is an important step from preventing infection from swine flu. But in addition to washing your hands frequently, you also have to avoid touching the T-zone of your face. Like I said, the eyes, nose and mouth. So that's a T-zone of the face. So you have to avoid touching that with your fingers, because from your fingers the infection can travel inside your... And washing of hands should be in a proper way. Besides that,
the hard surfaces where the droplets fall, they have to be kept clean. I mean, जैसे आपका ये कीबोर्ड है इस लैपटॉप का, उसको भी certain chemicals से clean करना होता है, especially chlorine bleach chemicals, ट्राइजीन एडवांस या क्लोरॉक्स. उससे क्या होता है, जो वायरसेस हार्ड सरफेस पे होते हैं वो मर जाते हैं. अच्छा, तो फेस मास्क लगाना कितना उस टाइम पे हेल्पफुल है हमारे लिए? So face mask does protect you in the sense if you are going in a crowded place, भीड़ भड़क्का में जा रहे हैं, आपको पता नहीं कितने इन्फेक्टेड लोगों से आपका इंटरेक्शन होगा, वहाँ पे फेस मास्क डेफिनेटली हेल्प करता है. बट जो N95 रेस्पिरेटर होता है उसकी बात करें अगर, तो उसकी जरूरत नहीं है. वो दैट इज ओनली इंडिकेटेड फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स हु आर हैंडलिंग स्पेसिमेंस containing swine flu directly, or who are doing bronchoscopy, or who are doing tracheal suctions. Their N95 mask is indicated, not otherwise. बट अगर हमारे पास फेस मास्क नहीं है और हम ऐसी क्राउडेड प्लेस पर है, तो कीपिंग अ हैंकी ओवर द फेस, इज दैट हेल्प्स? हैंकी से ज्यादा अच्छा ये है कि अगर if you are coughing and sneezing, you should use a tissue paper. Because once you cough and sneeze, you use that tissue paper and then you cough into that tissue paper and discard that. Okay. But if you were to cough and sneeze into a handkerchief, the viruses are going to stay there, and you are going to spread it to in other ways. Okay, next question we have: can be prevented vaccines? Okay, so somebody is asking about the vaccines. Yes. Vaccinations. So there is a vaccine available for swine flu, and it's a very safe vaccine, and it should be ideally given in somewhere around September, October, or one should make sure कि उस सीजन का प्रिवेलिंग स्ट्रेन से बनी हुई वैक्सीन होनी चाहिए. Okay. ये ना हो कि पुराने पिछले साल की वैक्सीन आप यूज कर रहे हो. तो जस्ट मेक श्योर दैट व्हेन यू बाय द वैक्सीन फ्रॉम योर केमिस्ट, इट इज द prevailing strain vaccine which is being used. Okay. And it is to, once you take the vaccine shot, the protection starts after 2 weeks and the protection lasts for 1 year. So and you have to repeat that vaccine every year. So it's a intramuscular vaccine. कुछ टाइप ऑफ पेशेंट्स में बहुत जरूरी है ये वैक्सीन लेना, जिनमें रिस्क ज्यादा होता है स्वाइन फ्लू का, जिनमें कॉम्प्लिकेशन का रिस्क ज्यादा रहता है, जैसे people above 65 years of age, children less than 5 years of age, women in the family way, people who already have a coexisting disease like a heart disease or lung disease like pneumonia, bronchitis, or asthma, or who are immune compromised because of some medication they are taking, जैसे steroids ले रहे हैं, या उनका immune system किसी बीमारी की वजह से suppressed है, कैंसर या डायबिटीज वगैरह की वजह से, तो उनमें स्वाइन फ्लू वैक्सीन जरूरी होता है. तो क्या ये वैक्सीन बहुत एक्सपेंसिव है? No, it's not a very expensive vaccine. It's a fairly reasonable vaccine, and it's available all across. And these category of people should definitely take the vaccine. But if you can't take the vaccine, then other steps to prevent flu are equally effective. I mean, and this, in the sense that if your immune system is strong, और आप बाकी सारे steps ले रहे हो prevent करने के लिए, तो it's not necessary for you to take the vaccine if you don't have any of these conditions which I listed out. तो यहाँ एक क्वेश्चन है कि वैक्सीन हर साल लगानी पड़ेगी? जी, अगर आपको प्रोटेक्शन कंटिन्यूअस बेसिस पे चाहिए तो it has to be administered every year around September, October. Okay, why do people die of swine flu? Why people die of swine flu is because if you don't treat swine flu on time, it can cause complications like pneumonia. एक serious lung बीमारी होती है adult respiratory distress syndrome, जिसकी वजह से पेशेंट्स ICU में पहुंच जाते हैं, उनका लंग्स काम करना फेल हो जाता है और उनको वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है. और ऐसे पेशेंट्स में करीब 80 से 90% पेशेंट्स जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते. अच्छा, तो ये जो सीजन है स्वाइन फ्लू का सीजन, ये कब होता है यूजुअली और ये कब तक रहता है?
So it depends upon the outbreak. It depends upon the season, when especially winters, that's the time when it sets in. But it's a once a year epidemic, and once in every 20 years there's a pandemic, meaning that the disease spreads across continents. Another question we have is swine flu a foodborne illness? No, swine flu is not a foodborne illness. It does not get transmitted through contaminated food. It is transmitted only through droplets. Droplets meaning when a person who has swine flu is coughing and sneezing, these droplets contain the virus, and that's how the swine flu spreads. Okay. So any diet recommendation? Yeah. So what I would strongly suggest is that you should have a strong immune system, and to have a strong immune system, you should take a balanced, nutritious diet, avoid skipping meals, and hydrate yourself really well, and make sure you get your adequate 7-8 hours of sound uninterrupted sleep, and you exercise regularly. So with these steps, your immune status will stay strong, so you will not catch infections like swine flu. Okay, so इसका जो treatment है वो similar है normal flu से? Yes, so initially what we do is, when a patient comes with flu, we examine him, we check whether it is a seasonal flu or whether it is a swine flu. And basis the examination, we decide whether this particular patient needs to be given a test to confirm whether it is swine flu. अगर उसमें confirm होता है, then we start the treatment for swine flu. अच्छा, तो ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो स्वाइन फ्लू में आप रिकमेंड करते हैं अपने पेशेंट्स को? स्वाइन फ्लू के लिए एक तो द मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट इज ऑफ कोर्स अ थ्रोट स्वैब, बट उसके साथ में हम ब्लड टेस्ट भी करते हैं, सीबीसी काउंट्स वगैरह, टीएलसी यूजुअली फ्लू में कम होता है, बट स्पेसिफिक टेस्ट इज अ थ्रोट स्वैब वेयर इन वी टेक अ स्वैब फ्रॉम द नोज एंड द बैक ऑफ द थ्रोट, एंड दिस इज by a technique known as PCR, polymerase chain reaction. We see the genetics of the virus in the laboratory. So this is the final confirmatory test for swine flu. तो ये टेस्ट भी एक्सपेंसिव होते हैं? Yes, it is a fairly expensive test, but lately the government has set a capping to the cost, and no laboratory can charge more than 4,500 per test. Okay, another question is swine flu turned pandemic in 2009. Do you think it can spread far and wide this time as well? Yes, so that's why the health authorities are worried, because there has been a rapid rise in the incidence and the prevalence of swine flu cases. And they say that every 10 years or 20 years, there's a pandemic, meaning there's a rapid outbreak wherein in number of cases spread across countries and across continents. So there is a potential for spread. Okay, च्यवनप्राश जो है usually घर पर तो मॉम डैड बोलते हैं कि खांसी है, च्यवनप्राश खाओ. So does it help in swine flu also? It's a tonic to build your immune system. So if you take regular च्यवनप्राश, yes, your immune system will stay strong, but it's not a specific antiviral drug. If you have swine flu, there are other antiviral drugs which are available, which are used specifically in swine flu. It's just that immunity build करने के लिए च्यवनप्राश. Yeah, on a regular basis, and more of a preventive measure. Okay. Is vaccination helpful when we are sick, have cough or cold? So swine flu vaccine should not be given during cough and cold. किसी को अगर बुखार है, खांसी जुकाम है, उस दौरान वैक्सीन नहीं देना चाहिए. हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए. वैक्सीन इज मेंट फॉर प्रिवेंटिंग the disease. So vaccine is given to a healthy individual when he is not having any active infection. Okay. If untreated, how fatal is swine flu? So if you don't treat swine flu timely, it can rapidly progress and spread across and cause complications like bronchitis, ear infection, pneumonia, like I said, myocarditis, heart inflammation, and it can cause adult respiratory distress syndrome, which is a serious lung disorder leading to the use of ventilators and ICU admissions. Okay. Can swine flu vaccination given to newborn? So usually we say that
uh, immediately a newborn already has a whole lot of antibodies which he's getting from his mother, so immediately he doesn't need a swine flu vaccine. But children beyond 1 year of age and less than 5 years of age, there definitely one should give the swine flu vaccine. Okay. Can swine flu be transmitted through food? No, it's not transmitted through food. It's through droplets only. Droplets which are transmitted through coughing and sneezing. Okay. Why does it take 2 or more days to get swine flu test results? So the PCR method of technique of testing for swine flu is a very detailed testing wherein you are trying to identify the genes, the genetics of that particular virus. So that's why in the laboratory to do that polymerase chain reaction, it takes 24 hours. Achha, okay. So there are certain labs which do it in 12 hours as well. So if pork meat is well cooked, then उससे chances कम होते हैं swine flu. So it is swine flu does not spread through food and water. So pork momos is perfectly fine because somebody asked here. It's not transmitted through food. No. Okay. Should a flu afflicted person go to work or stay home? I believe it's highly contagious. That's right. So if you have flu or viral illness, you should stay home because one, your recovery will be faster and better. You have to hydrate yourself. Secondly, when you go to work, you can spread the infection to others. So it's always, we always say that if you have flu-like illness, stay home, take rest and have lots of fluids and take the medications. Consult your doctor. Okay, so for people जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है हमारे साथ, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम. और सेकेंडली हम स्वाइन फ्लू पे बात करें ऑन पॉपुलर डिमांड बिकॉज इसके केसेस बहुत बढ़ चुके हैं और हमें बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. सो फटाफट से एक क्विक रिकैप कर ले अभी तक हमने क्या बात करी है स्वाइन फ्लू के बारे में. So it's a highly infectious contagious respiratory tract disease caused by a virus known as influenza virus. Okay. And it causes fever, muscle aches, body pains, joint pains, causes diarrhea also, and it spreads through droplets when a person coughs and sneezes, and it has a direct spread as well as indirect spread. And the best way to prevent is to wash your hands frequently, not to touch the T-zone of the face, and to keep your immune system strong through a nutritious diet, regular exercise, etc. And also to keep the hard surfaces, commonly touched objects like the keyboard, telephone, handsets, etc. with using certain chemicals which kill that virus. So, and it's a easily preventable disease. There is a vaccine available to take the shot to prevent the vaccine. Plus, if you get swine flu, there is a treatment available. So don't delay in going to your doctor. Get the adequate treatment so that you don't land up with complications of swine flu. Okay, so another दोबारा से यही चीज है कि सीजन जो होता है स्वाइन फ्लू का वो कौन सा विंटर समर? Usually mostly in winters. अच्छा ठीक है. Is it true that cancer patients or other immunocompromised patients are more prone to get swine flu? That's right. People whose immune system is not strong, they'll not be able to fight this infection. So their chances of getting swine flu is much higher. That's why giving the swine flu vaccine is critically important. तो कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे अपनी इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए अगर हमारे? So to build your immunity, one is have a nutritious, balanced diet. Don't skip your meals. Hydrate yourself really well. I mean, our body is composed of 50-60% water. So for every 20 kilogram of your body weight, you need 1 liter of water every 24 hours. Okay. So अगर आपका वजन 60 किलो है तो आपको 3 लीटर पानी चाहिए कम से कम 24 घंटे में. तो हाइड्रेशन अपना इंटैक्ट रखें और don't skip meals and ensure that you get your adequate sound sleep, 7-8 hours of uninterrupted sound sleep. Plus you exercise regularly in the sense you walk for at least 30-45 minutes, brisk walk, and stay active and fit. So, and if possible, take a multivitamin capsule once a day so that
your immune system stays strong. So people above the age of 65 तो Right. वो ज़्यादा तो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, Right. पर ऐसा कुछ टिप्स आप उनको देना चाहोगे जिसकी वजह से वो अपने आप को बचा के रखें स्वाइन फ्लू से? So, in addition to whatever I said, people who are above 65 years of age, स्वाइन फ्लू से बचने की एक वैक्सीन अवेलेबल है जो वो once a year साल में एक बारी जरूर लगाएं सितंबर अक्टूबर में, off with the virus. It should have the prevailing strain of that virus, and ensure that you have a good nutritious diet and hygiene standards अपने बढ़ा के रखें. ठीक है. What precaution to be taken while going out in a hospital with a newborn baby? So, if you are going to a crowded place, which is a crowded hospital where you are likely to interact with people who may potentially be having swine flu, it's always best to wear a face mask. A normal standard surgical face mask, which is available in any chemist shop, if you use 2 face masks at a time, that gives you 100% protection. So you don't really need a N95. That much is good enough. Plus, wash your hands frequently with running water and soap, and ensure that your hydration is good and your nutrition is good. Okay. Another question we have, if it's respiratory infectious, is it dangerous for people having asthma? Yes, people who have asthma, there the chances of getting swine flu is much higher because their lungs are not optimally functioning, and this is a virus which primarily infects the respiratory tract. Okay. Another same person asking कि winter season ही क्यों? Swine flu के लिए because there are certain weather conditions and temperatures which are conducive for the propagation of this virus. ये virus उन्हीं conditions में multiply ज़्यादा करता है. Peak summers में ये virus multiply नहीं करता. तो winters के time पर उनको ज़्यादा हमारे को careful रहना चाहिए. The kind of temperature we have right now. Okay. How much time does recovery from swine flu takes? So it depends upon when you start treating and when you start taking action. But usually it takes about a week, 10 days. But if you treat it early, within 3-4 days, you can get okay. Okay. क्या swine flu future में क्या future में virus में कुछ खतरनाक बदलाव आने के chances हैं? In future, you never know because the virus is going to mutate. That's the nature of this influenza virus. Mutates, it changes its antigens on the surface of the virus, and people are taken off guard. And if you have not been vaccinated and if you already have a disease which is pre-existing and you are prone to catching infection, then a person is likely to get complications. So that's why it's a very highly risky condition. Okay. Can regular hand wash prevent swine flu? Yes, if you wash your hands frequently with running water and soap, that's the best way to prevent flu. But washing of the hands with soap and water should be a thorough washing for at least 20 seconds duration. Okay. So जो ये vaccination की हम बात कर रहे थे, क्या ये age group specific भी होती हैं? No, it's the same vaccine which is available for all age groups. It should have that strain which is prevailing in the community at that time. Okay, so I have got a list of questions जो हमारे WhatsApp से आए थे. जी. तो Friday को जब हमने last time swine flu पर करा था Family Live हमारा, तो बहुत overwhelming हमें response मिला because I think people are watching और काफी spread भी है तो naturally there's a concern. Yeah, and I think आप अभी इससे पहले बता भी रहे थे कि आपके इसमें आज OPD में काफी patients भी आए थे. That's right. है ना, तो क्या problems लेकर आते हैं वो? Mostly people come with high grade fever above 100 degrees Fahrenheit. Along with it, उसके साथ में खांसी, जुकाम, running nose, sore throat, cough, severe body aches, intense body aches, chest pain. Some people even have a little bit of diarrhea or vomiting. So ये problems क्या था? Mostly these are the presenting symptoms. Okay. I'll just read out a few questions. Sure.
what to do and what not to do when you experience first sign of swine flu? So जैसे ही आपको खांसी जुकाम की शुरुआत लगे और जिस टाइम पे आपको लगे कि अभी हल्का सा बुखार लग रहा है और गला चिपक रहा है, उस टाइम don't exert yourself physically, avoid physical exertion, take rest, have lots of hot soups and have coconut water, fresh lime, गरम चाय, शहद, अदरक डाल के पिए। और अगर गला चिपक रहा है तो किसी सॉल्ट गागल्स या बीटाडीन गागल्स, इस टाइप क्लोरॉक्स गागल्स, इस टाइप से गागल्स करें दिन में 3-4 बारी। और अगर नोज में रनिंग नोज है तो नेजीवियन या ऑट्रोविन से नेजल स्प्रे करें। उससे क्या होता है कि ब्लड वेसल्स जो है नोज में वो सिकुड़ जाती हैं, उससे वायरस फिर पूरी बॉडी में फैलता नहीं है। अच्छा। और रेस्ट करें, फिजिकल एक्सर्शन ना करें, और टेक अ क्रोसिन और अ पैरासिटामॉल। छोटे बच्चों में एस्प्रिन अवॉइड करनी चाहिए। So these are the common steps one should take to nip it there in the bud. Okay. Does seasonal influenza vaccine also protect against H1N1? So it's the standard same flu vaccine which is available. It has all the strains, 4 strains which are there prevailing, common strains which are prevailing. So it protects you from all those 4 strains. Okay. घर पे ट्रीटमेंट हो सकता है? Yes. हाँ, घर पे ही ट्रीटमेंट होता है स्वाइन फ्लू का मोस्टली, अनलेस कॉम्प्लिकेशंस होए कि अगर एडमिट करना पड़े, बट मोस्टली ट्रीटमेंट घर पे ही होता है इसका। तो स्वाइन फ्लू अगर स्टार्टिंग में ही हमने फिगर आउट कर लिया कि सिम्टम्स जो हैं हमारे नॉर्मल फ्लू के ना होके स्वाइन फ्लू के हैं, और अगर ट्रीटमेंट हमने स्टार्टिंग से ही प्रॉपर लिया तो ये कभी सिवियर नहीं होगा। Yes, it can, अंडर कंट्रोल में। बिल्कुल बड़ी स्पेसिफिक दवाइयाँ अवेलेबल हैं जो उसको वहीं रोक देती हैं। अच्छा, ओके। I got a flu shot earlier this year. Is that enough to protect me from swine flu? Not necessarily. Yes, the flu shot does protect you, but उसके साथ में आपको बाकी एहतियात भी बरतने पड़ेंगे, in the sense कि hand washing frequently with soap and water, not touching the eyes, nose and mouth. So ये सब precaution आपको बहुत जरूरी है लेने। अच्छा, ओके। क्या कोई ऐसी मेडिसिन है जो अभी ले लूं जिससे मुझे बाद में स्वाइन फ्लू ना हो? एंटीवायरल मेडिसिन ऐसे नहीं लेनी चाहिए। अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करके रखना चाहिए और प्रिकॉशंस लेने चाहिए जो मैंने बोले। ओके। एंटीवायरल मेडिसिन तभी दी जाती हैं जब एक्चुअल डिजीज होती है। अनदर क्वेश्चन है कि स्वाइन फ्लू की क्या वजह ऐसी है जिससे जोड़ों में दर्द उठता है, जॉइंट पेन्स? So swine flu causes diseases of the respiratory tract, means nose and lungs. It does not cause joint pains. Doesn't cause. Okay. What more I can do to protect myself from swine flu? So जैसे मैंने आपको बताया, हाथ धोने होते जितनी फ्रीक्वेंटली आप रनिंग वाटर और सोप से हाथ धोएं उतना बेटर होगा। हाइजीन अपनी मेंटेन करें, अपना फिंगर से आईज, नोज और माउथ ना छुएं। अगर आपको खांसी जुकाम है तो कॉफ एक टिश्यू पेपर में करें और उस टिश्यू पेपर को डिस्कार्ड कर दें आफ्टर कॉफिंग एंड स्नीजिंग। एंड हैव अ गुड न्यूट्रिशियस डाइट, अवॉइड स्किपिंग मील्स, हैव एडिक्वेट स्लीप, एक्सरसाइज रेगुलरली, एंड कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, इन द सेंस जैसे कोई आपका जो डेस्कटॉप है, डोर हैंडल्स हैं, उसको साफ सफाई रखें। और क्राउडेड प्लेसेस में अगर जाएं जहाँ पे पोटेंशियल है स्वाइन फ्लू के पेशेंट से इंटरेक्ट करने का, हॉस्पिटल या एयरपोर्ट में, वहाँ पे फेस मास्क लगा के जाएं। अच्छा, तो अनदर क्वेश्चन जो मुझे आया था व्हाट्सएप पर वो ये था कि माय चाइल्ड हैज स्वाइन फ्लू, हाउ डू आई हेल्प माय चाइल्ड स्टे नरिश्ड? सो अगर आपके बच्चे को स्वाइन फ्लू है तो इमीडिएटली एक पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करें और उसकी स्पेसिफिक दवाई आती है ओसेल्टामिविर, वो बच्चे के वजन के हिसाब से कैलकुलेट करके डोज वो पीडियाट्रिशियन आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, वो इमीडिएटली स्टार्ट करते हैं। अगर वो दवाई विद इन 3 days ऑफ ऑनसेट ऑफ इलनेस स्टार्ट की है, उसका रिस्पॉन्स सबसे बढ़िया आता है जितनी जल्दी दवाई शुरू की जाती है। देर से शुरू करने में उसका रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं आता है। और नरिशमेंट तभी अच्छा होगा जब वो डिजीज पे काबू आएगा। नरिशमेंट के लिए नारियल पानी पिलाएं बच्चे को, हॉट सूप्स पिलाएं, विंटर का सीजन है तो हॉट सूप, और
अच्छा गरम चाय हनी डाल के, अदरक डाल के, these things help. अच्छा, okay. I heard there is a mutant H1N1 virus which is even more dangerous. So that's the H1N1, which is known as the swine flu virus. This is the virus which is a very dangerous virus because it has a potential of causing severe complications. Severe complications, okay. अच्छा, is H1N1 swine flu vaccine safe? If not, इसके क्या side effects हो सकते हैं? So it's a very safe vaccine in the sense it should not be given during an active infection. किसी को अगर जुकाम खांसी है उन दौरान नहीं देना होता है. अगर किसी को एग वाइट से एलर्जी है तो भी ये वैक्सीन नहीं देनी होती बिकॉज it is made out of white of egg. And people who are healthy and they can be easily given this vaccine. It's a heat killed vaccine. So very safe vaccine. पर अगर बाय चांस हमें नहीं पता और हमने ले ली वैक्सीन और इसके हमें सूट नहीं किया तो तब क्या करना चाहिए? तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें. अगर आपको एलर्जिक रिएक्शन होता है तो उसकी ट्रीटमेंट करवाएं. इमीडिएटली अटेंड टू इट. तो ऐसे कैसे पता चलेगा कि वो हमें सूट नहीं किया, हमें इससे एलर्जी? इमीडिएटली अगर आपको कोई जहाँ पे इंजेक्शन लगा वहाँ पे दर्द हो रहा है, लाल हो गया या सांस फूलने लग गया या घबराहट होने लग गई, फीवर आ गया या रैश हो गया कोई, तो दैट मींस इट्स एन एलर्जिक रिएक्शन. अच्छा ठीक है. फॉर अगेन जो पीपल जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, हम स्वाइन फ्लू पे बात कर रहे हैं हमारे डॉक्टर आशुतोष शुक्ला के साथ. अगर डॉक्टर आप अनदर क्विक रिकैप दे दें, अभी तक हमने जो बात करी है. So swine flu is a easily preventable disease. And there are simple steps to prevent it. So it's a disease which is spread by droplets. And so these preventive steps help preventing not only swine flu, but they also help prevent other diseases which are spread by droplets like chicken pox, measles, mumps, rubella, meningitis and tuberculosis. So the preventive steps are the same. Acha, okay. So स्पेशली फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे कि वो क्या ऐसा करे जो स्वाइन फ्लू? So women in the family way, pregnancy is an immune modulatory state. So their immune system is not like that of a normal healthy adult. So one, they are more prone to catching infections. So especially in when there is an outbreak of swine flu, women in the family way should be given the swine flu vaccine. If God forbid a lady in the family way develops swine flu, the risk is that persistent coughing can cause a miscarriage or an abortion. But this virus does not transmit vertically. मतलब blood stream में mother से placenta के through बच्चे को नहीं transmit होती. That's not the way the virus spreads. It is a droplet spread. So when the mother is coughing or sneezing, that's how she's spreading to others. So इस वैक्सीन का या फिर जो भी हम मेडिसिन ले रहे हैं, इसका होने वाले बच्चे पे तो कोई असर नहीं होता. बड़ी और अगर जब एक्चुअल डिजीज हो जाती है तो इनफैक्ट इवन प्रेग्नेंट विमेन में ये जो एंटीवायरल दवाई है ओसेल्टामिविर, इट्स अ वेरी सेफ मेडिसिन and it should be prescribed if it is proven that it is swine flu. और जो बच्चे होते हैं 1 साल से छोटे, वो भी एंटीवायरल ले सकते हैं? हाँ, वो डोज के हिसाब से, मतलब वेट के हिसाब से डोज कैलकुलेट होती है. वो भी सेफ है? यस, एब्सोल्युटली. अच्छा, तो ये एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन हैं, ये काम नहीं करती स्वाइन फ्लू? स्वाइन फ्लू में कोई एंटीबैक्टीरियल का रोल नहीं है बिकॉज इट्स अ वायरल इन्फेक्शन. हाँ, कुछ केसेस होते हैं जो प्रोलॉन्ग लंबे खिंच गए और वो वायरस लंबा खिंच गया, आपने टाइम से इलाज नहीं कराया, फिर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तब यस एंटीबायोटिक्स आर इंडिकेटेड, बट दोज आर डिफरेंट कंडीशंस, रेयर कंडीशंस. अच्छा, और अगर किसी को लास्ट टाइम भी मुझे किसी ने पूछा था कि जैसे HIV हो गया, एड्स HIV, तो इससे हमारा इम्यूनिटी ऑलरेडी डाउन हो जाता है, तो उस टाइम पर स्वाइन फ्लू कैच करने के हमारे को ज्यादा चांसेस, रिस्क ज्यादा रहता है. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. HIV वाले पेशेंट्स में स्वाइन फ्लू पकड़ने का रिस्क ज्यादा रहता है, कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क भी ज्यादा रहता है. तो जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी डाउन है, जो ऑलरेडी बीमार है, उनको वैक्सीन लेना बहुत अनिवार्य है. तो जो डायबिटिक्स हैं या जो कैंसर पेशेंट्स हैं, उनको भी ज्यादा चांसेस हैं हमारे बिल्कुल सही स्वाइन फ्लू लेने.
उनमें भी वैक्सीन जरूरी होती है और सारे एहतियात बरतने पड़ते हैं, जो प्रिकॉशंस मैंने आपको बताया। अच्छा, पर अगर जैसे कोई पर्सन है जो ऑलरेडी कैंसर ट्रीटमेंट ले रहा है जी, और अगर उसको स्वाइन फ्लू होता है तो कैसे वो क्या करे, क्या ट्रीट करे? वो कैंसर का ट्रीटमेंट अपनी जगह पे है, वो चलता रहेगा। साथ में वी विल ऑल्सो प्रिस्क्राइब एंटीवायरल ड्रग्स like oseltamivir. These viral drugs, antiviral drugs, they stop the replication of the virus, and they are very effective. Uh, Ideally, they should be started within 3 days of onset of the swine flu, because that's when the response is best, and delay is not a good idea. So these medicines are very effective, and they are usually given in a dose of 75 milligram twice a day for 5 days. That's the course for these medicines. तो अगर ऐसा कभी पता ना चला, क्योंकि कई बार कीमो के साइड इफेक्ट्स इतने हार्ड होते हैं कि उसमें स्वाइन फ्लू का नहीं पता चला, तो और क्या इससे आगे कॉम्प्लिकेशंस और हो सकते हैं? यूजुअली स्वाइन फ्लू के सिम्टम्स को पहचानने की कोशिश करें, जैसे बुखार है, खांसी जुकाम, रनिंग नोज, सोर थ्रोट, कॉफ, बॉडी एक्स, मसल पेन्स, डायरिया। सो अगर आप पहचान लेंगे सिम्टम्स को तो आप क्विकली एड्रेस कर पाएंगे और अपने डॉक्टर को इमीडिएटली कंसल्ट करें, वो आपको टेस्ट कराएगा और उसका इलाज भी बताएगा। अच्छा, इसमें खास तरह के खाने से परहेज भी करना चाहिए, फूड्स टू अवॉइड? सो यूजुअली स्पाइसी और डीप फ्राइड फूड्स हम लोग इसलिए मना करते हैं ड्यूरिंग स्वाइन फ्लू, बिकॉज there is a risk of acidity and gastritis. So that's why we say to avoid these spicy and deep fried food items. So simple food items which will be digested easily. That's the idea. अच्छा, तो ये फैक्ट सही है कि स्वाइन फ्लू इजीली ट्रीटेबल है? 100%, yes, it is easily treatable and preventable also. अगर प्रॉपर्ली सही timely address करा तो if you don't address it timely, then there's a risk of complications which are even fatal. अच्छा, तो जो ये स्वाइन फ्लू की मेडिसिन हैं या जो हमारी वैक्सीन है, इनकी कोई ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं, ये सेफ है हमारे लिए? So the vaccine is a very safe vaccine provided it is मतलब आपको अगर वाइट ऑफ एग की एलर्जी नहीं है, पहले आपने वैक्सीन ली हुई है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो इट्स अ सेफ वैक्सीन। ड्यूरिंग फीवर ये वैक्सीन नहीं दी जाती है, सो दिस इज टू प्रिवेंट अ फ्लू इन्फेक्शन। बट अगर जैसे किसी को अगर ऑलरेडी फ्लू हो गया है तो फिर हम एंटीवायरल दवाइयाँ देते हैं जिसमें कि वो ट्रीटमेंट किया जा सके। अच्छा, और एज स्पेसिफिक तो कोई वैक्सीन नहीं है? नो, दिस वैक्सीन कैन बी गिवन टू एनीबॉडी। अच्छा, और कुछ ऐसे पॉइंट्स अगर आप बताना चाहेंगे 65 से ज्यादा एज वाले लोगों के लिए या जो बच्चे हैं? देयर आर सर्टेन कैटेगरी ऑफ पीपल who are at high risk of having swine flu and who are at high risk of getting complications, like people above 65 years of age, children less than 5 years of age, people who already have a comorbid medical condition like diabetes, heart disease, lung condition like pneumonia, bronchitis, or heart disease, diabetes, or people who are immune suppressed, whose immune system is suppressed because of cancer, or who are taking steroids. And certainly people who are morbidly obese with a BMI above 40 kilograms per meter square. तो obesity पे भी इसमें हमारा these people are more at risk of getting swine flu, and so these people should definitely be vaccinated. ओके, तो एक बार हम समराइज करते हैं हमारे जो भी स्वाइन फ्लू के सिम्टम्स के बारे में, प्रिकॉशन, प्रिवेंशन, एंड आई थिंक जो लोगों ने हमें ज्वाइन किया मैक्सिमम हमने क्वेश्चंस सबके आंसर किए हैं। पर अगर आपको फिर भी कोई सवाल है तो दिस इज द राइट टाइम, आप अभी पूछ लीजिए, डॉक्टर हमारे साथ हैं, आपको स्पेशल अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको यहीं पर आंसर देंगे आपके सारे सवालों के। तो आप जब तक एक बार छोटा सा ब्रीफ एक कंक्लूजन दे रहे हैं जी, आप अगर अभी पूछना चाहें तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, कुछ भी आपको सवाल है तो। स्वाइन फ्लू लाइक आई सेड एक रेस्पिरेटरी डिजीज है जो हमारे लंग्स और हमारी अपर एयरवे को इन्वॉल्व करती है और एक से दूसरे को बड़ी जल्दी फैलती है। एक वायरस होता है जो जिससे होती है इन्फ्लुएंजा वायरस, और ये म्यूटेट करता है, हर साल चेंज करता है, तो इसलिए इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है जो साल में एक बार ये लगवा सकते हैं। और इसको प्रिवेंट करने के लिए तरीके ये होते हैं कि आपको जब भी खांसे छींके तो एक टिश्यू पेपर में खांसे और उस टिश्यू को डिस्कार्ड कर दें, नॉट इट टू योर हैंड्स,
and wash your hands with running water and soap frequently. And don't touch the T-zone of your face, the eyes, nose and mouth. And use face mask when you are going to crowded places where you are likely to interact with flu patients. और respirators नहीं use करना चाहिए. जो 90mm respirator है, they are meant for healthcare workers who are handling specimens or who are doing bronchoscopies or who are doing tracheal suctions. तो आई थिंक एक हेल्दी लाइफस्टाइल, प्रॉपर खाना जी, है ना, एक्सरसाइज करना जी, और अपने आप को बचा के रखना जी, आई थिंक अब आप सब कुछ सीख गई हैं. तो ये आई थिंक मेन चीजें हैं जिसका ख्याल रखेंगे तो हम आई डोंट थिंक कि सिर्फ स्वाइन फ्लू से बट बाकी सारे डिजीजेस से भी हम and all those diseases which are transmitted through droplets like measles, yeah, mumps, rubella, meningitis, tuberculosis, इन सब से आप बच सकते हैं. ठीक है. तो थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. थैंक यू जेंस, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर स्टूडियो. श्योर. ओके, सो अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम या कोई और क्वेरीज हैं जिसके बारे में आप चाहो कि हम दोबारा फैमिली लाइव करें, या अगर आप और कुछ सवाल पूछना चाहें तो यू आर ऑलवेज वेलकम. आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पे पूछ सकते हैं, या आप हमारे वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं. www.famhealth.in हमारी वेबसाइट का लिंक है. आप जरूर विजिट करिए आई वुड से, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ स्वाइन फ्लू या कैंसर से रिलेटेड टॉपिक्स नहीं है जिस पर हमने बहुत चीज़ें पोस्ट करी है. आई थिंक आपकी मैक्सिमम चीज़ें जो है, क्वेश्चंस जो होंगे वो उसी से आंसर हो जाएंगे. प्लीज़ एडवाइज अस कि आप नेक्स्ट टाइम हमें कौन से टॉपिक पर फेसबुक लाइव हमारा जो है फैमिली लाइव इनफैक्ट जो हम करते हैं देखना चाहेंगे. टिल देन, सी यू नेक्स्ट टाइम.